so much for giving me opportunity to introduce myself. Myself Prashant Kumar hai. Basically, I'm belonging from Bihar, Patna. I'm completed my BTech Bachelor of Technology from Noida International University, Greater Noida, and my pass out year is 2016. Having a 2 year experience as a site engineer, having a 4 year experience with the MEP consultant. Right now, I'm doing internship of a structure. I'm doing a structure internship with Unix Civil. My mentor is Mr. Akash Pandey. Thank you, sir. Okay. Mr. Prashant, why you left your previous job and started your career? Like you're trying to start your career in structures. Sir, I'm spending a lot of time with the MEP consultant, and I realized that after a few years, I'm not using 100% of my talent or my brain. So I'm just trying to switch in a structure because I'm very much interested to learn more about the structure. So, so that's why I'm trying to move in a structure department. Okay, that is the reason, right? But you left your job and then started preparation. You can do the same thing with your job also. Sir, the main reason is due to some personal problem, land related issue. So I have to quit particular job on that time. So after completing my personal work, I feel that it's better to be switched for a better position or better work where I can feel blessed to do the highly appreciated work. So that's why, sir. Got it. So when you left your previous job? Sir, in 2022, sir. From 22, 20 23. Ji, sir. from 22 to till now, you just focus on your related to problem property related work only. Yes, sir. Yes, sir. Definitely, sir. It is use time, like maybe you forget your all the basics which you learn in your office job. No, sir. I remember all the things. Mostly, I remember all the things. And the main thing is that that property was an essential property, having approximately in three more than 3 lakh square feet land in my hometown. So it is very difficult to manage all the personal problem with the inside within a family or the outside. So it's a government process. So it's take too much time to do on the time and managing all these things. I have to travel a lot from Noida NCR to Bihar within it regularly 2 to 3 months. So that is the thing, sir. So it take too much time and it's make a fight. It is now it is fixed now. Now, sir, when it's come to the if I have to answer the personally to you, so sir, it is struck nearly to 80, come to the 80% due to some inside problem, sir, and having a fund related issue. So I feel that I'm just quite depressed with the that to this particular situation where I'm struck. So I feel that it's better to be continue my career. So I have to step back and I put back and I just continue my work. And so, sir, I Okay, totally but yes, sir. maybe it is not good for our company if I'll hire you and if you engage your mind with your mind in that same situations. No, I sir. mean, Right now, I'm just completely concentrated on I'm concentrating on my present work, and I'm trying to give 100% to my work. And I'm planning to. I'm not so much interested for next 5 years. I just try to solve that particular problem. When I balanced and my career will enhance with the position. So if I have a time in the future, so I will try to solve. So I have all these things I try to put on the time. What the destiny want and what's the time. So that's why, sir. okay, what you learn from ETFs means what are the things we can do in ETFs? Sir, in ETAPS, I learned how to make the model and how to apply different type of load and how to do the static analysis, seismic analysis, wind analysis, and so on, sir. What is the difference between wind analysis and seismic analysis? Sir, seismic analysis, you can say it's a earthquake analysis. So you can say कि earthquake is coming randomly, or it can it come it is not fixed
with the time, but the wind load is continuously with respect to time. For an example, for particular area, 44 meter, 39 meter second. So the wind load is continuously on the building if the building is high rise, but the wind load, but the earthquake load, but the seismic is come unpredictable load to the building. Okay. Thank you so much, Prashant. This was nice to talk with you. Thank you, sir. प्रशांत ये कोशिश करना कि ये बताना कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो दैट इज नॉट फिक्स नाउ। ओके। क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, हमारे माइंड में आ सकता है कि यार तुम कहीं पर एंगेज होगे और तुम छुट्टियां लोगे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये कैसे होता है, ये डेफिनेटली घरेलू रिलेटेड मैटर होगा जहाँ तक है, राइट। तो घरेलू मैटर्स में आपको छुट्टी हो सकती है, आप माइंड से एंगेज हो सकते हो, जिसे बोला डिप्रेस वर्ड। तो ये मेरी Yes. कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा एज अ कंपनी Sir, ओनर। sir, when it's come to the personally discussion with you, so I'm discussing with you personally. यस। But in the term of professionally, I totally just मैं उनसे बाहर आ चुका हूँ और मैंने अभी सोचा है कि मैं अपना ये कीमती समय अपने करियर को दूंगा, जिससे कि मैं अपनी मदर को हैप्पी दे सकूं और उनको भी लग सके कि मैं एक अच्छे राह पे चल रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है आपकी। बस कंपनी को आपको ऐसे प्रेजेंट करना है कि नाउ आई फिक्स ऑल द प्रॉब्लम्स एंड नाउ आई रियलाइज इट, क्योंकि आपको 2022 से अभी तक, समझ रहे हैं ना। जी सर, मुझे जी पता सर। है आपकी प्रॉब्लम, मुझे पता है, बट कंपनी को एक बार नए तरीके से बताना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं कंपनी के तौर से देखना चाह रहा था आपको। ठीक है। जी ओके जी। ओके, थैंक यू सो मच प्रशांत, सो नाइस टॉक विद यू। नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर पवन, एंड आफ्टर पवन वी विल कम विद दिव्यांशु। Good evening, sir. Good evening, ji. Good evening, Mr. Pawan. Mr. Pawan, the same question with you is, what is the difference between wind analysis and seismic analysis? So seismic analysis involves the analysis due to the vibration of ground uh, on the building, but wind analysis involves in the wind load, which is gradually increases after a certain height to the top of the building. Okay, now, good. Thank you so much, Mr. Pawan. Pawan, introduce yourself. First of all, thanks for giving me an opportunity for this interview. And I am Pawan R. I am recently graduated from the University BDT College of Engineering in Civil Engineering. And after my completion of be a bachelor's of Civil Engineering, I have started an internship in Unique Civil, where I have been working as an intern for regarding the structures of a building. Okay, great. Who suggests you about structure engineering? Means you need to make your career in structures. Who suggests you for that? So after the completion of the bachelor's of engineering, so I thought that the knowledge about the structures is main for a civil engineer, as it would be beneficial for any engineer to move on with their career. So I thought learning these things will be beneficial for me. So I got interested in this and I got carried over with the same thing, and I am looking for a job in the same field because I have enough knowledge to make a project. What was your project in college? So, sir, the project was regarding the utilization of sugarcane bagages in the concrete. That was my thing, sir. But I thought कि मैं change कर दूंगा इसे because recently शुगर कैन से क्या कर रहे थे आप? Sir, sugarcane की bagages होता है, sir. So what we do is we partially replace the cement by some percentage with this sugarcane bagages. So it increases the compressive strength of the cube that we test by almost 45%. तो ये होता है कितना परसेंट रिप्लेस करने पर? 10%. बिकॉज 20% से ज्यादा कहीं पे भी सीमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते, इवन इफ यू यूज 5S also that is 20% limit. ठीक है। Actually, it was about using 5%, 10%, and 15%, and 20%. But we actually found that optimum quantity of replacement is actually 10% itself. Okay. And it would be beneficial. Okay, got it. No. How can we reduce the mass of the building? So the mass of the building can be reduced by varying the column and beam sizes and choosing the optimum
sizes of the beam and columns and the slabs, which are most efficient way of reducing the mass of the building. How can we shape our structure from torsion? If torsion is exceed, how can we shape the our structures? So we have to give the laterally force resisting members like shear walls and bracings along the building, and we can even use the bracings globally towards the building so that we can reduce the lateral forces. In such a way, we can reduce the torsion, and even geometry of the building plays a vital role in reducing the lateral forces and torsions. Got it. What's your salary expectation, Mr. Pawan? Sir, about 3 lakh. Above 3 lakh is the priorities. Okay. You applied in the company? Sir, I have already made everything ready so that I can start applying. So I will start applying within a week, Within a week. Okay. and I am even getting ready to relocate myself to Okay. some other place. ओके, थैंक यू सो मच पवन। पवन, आप स्ट्रक्चर्स में अच्छे हैं, ठीक है, नो डाउट। और मेरा उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ये भी जान लीजिए आप, ठीक है। लेकिन आप एक जगह गलती कर रहे हैं, आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, अप्लाई करूँगा। और अप्लाई बहुत लेट करने में नुकसान भी होता है। क्या होता है ना, हाँ जैसे हमारी तैयारी एकदम पीक पर है और अभी मुझे ऑफर ही नहीं आ रहे। ऑफर कब आ रहे हैं? जब मैंने छोड़ दिया, हाँ राइट। वो बहुत नुकसानदायक होता है कि यार आता हुआ चीज़ नहीं है। जैसे कई बार एग्जाम में देखते हो ना आप लोग, अरे यार ये क्वेश्चन तो कितने बार लगाया था, एक बार रिवीजन कर लिया था काम हो गया होता। अब रिवीजन करने को टाइम ही नहीं था उस समय पर, समझ गए। तो अभी कोशिश करिए कि नियम बनाइए कि मुझे कम से कम 2 कंपनी में अप्लाई करना ही करना है, सो दैट आई कैन चेक माई एबिलिटीज एज वेल एज सॉल्व लिस्टिंग। बहुत सी चीज़ में देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अभी करेंगे तो बेटर है, क्योंकि 1 महीने बाद बंद हो जाएंगी लगभग जॉब्स, और फिर स्टार्ट होंगी अप्रैल मई में। तो बेटर है कि अभी करिए, हाँ सर, ठीक है। करूँगा। मैंने करने के लिए ऑलमोस्ट ऑल प्रिपरेशन हो चुका है सर, तो मैं कल से अप्लाई ही करने के करिए। लिए स्टार्ट कल से स्टार्ट कर दूँगा सर। यस, कल से करिए, मुझे यूनिक बताइएगा मैंने कौन सी 2 कंपनी अप्लाई किया। ओके, ओके, हाँ सर, ओके। थैंक यू सो मच पवन। ओके जी, नाउ नेक्स्ट इज थैंक यू मिस्टर, सर। ओके जी, मिस्टर दिव्यांशु शर्मा जी। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग दिव्यांशु, छत पे आए हो क्या यार? हाँ जी सर। लाइट बहुत अच्छी आ रही है तुम्हारे पीछे से, वो रोड की लाइट होगी जहाँ तक है। नहीं सर, नेचुरल लाइट है। अच्छा, एक मैं मिनट। तो 5th फ्लोर पे हूँ। 5th फ्लोर पे हो तो आई थिंक टॉप ऑफ द रूफ, राइट? हाँ जी सर, हाँ जी सर। ओके, और ये क्या, ये यहाँ पर रेंटल या ऑफिस की तरफ से है कुछ? नहीं नहीं सर, पीजी खुद का सेल्फ है, पीजी। सेल्फ पीजी। व्हाट इज द चार्ज देयर फॉर पीजी? क्या है चार्ज है? सर 9,000 है सर। विथ फूड? हाँ यस सर। एक रूम में 2 जने हैं सर। ओके, तो पीजी का मतलब यही होता है ना। मैं भी पीजी में लगभग हाँ जी, 4 साल रहा हूँ, 4.5 साल। तो एक रूम में 2 लोग हाँ थे, जी। हमारे रूम में तो 2-3 लोग रहते थे। तो उसमें हाँ खाना दोनों टाइम खाना होगा, राइट? यस सर, यस सर। ट्रिपल शेयरिंग थोड़ा सस्ता है, और अगर आप सिंगल लो तो वो थोड़ा महंगा है, वो उसी अकॉर्डिंग है। ओके, ओके, तो ये आजकल तो बहुत से ब्रांड्स चल चुके हैं जो कि पीजी प्रोवाइड करते हैं। आपने हाँ जी सर। वही लिया होगा जहाँ तक। चलिए, बहुत अच्छी। ओके, मे बी रेडी आप? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु, हाउ मेनी लेक्चर्स यू वॉच इन ई टैब्स? Sir, actually, I'm little bit behind. I just watched till 12. Actually, during Diwali, I am at home. That's why. But at home is okay, but priority is always, Yes, sir. right? Yes, sir. So I yes, cover with weekends. yes, try to complete it with दिव्यांशु, क्योंकि Uh, नहीं तो क्या होगा ना, पूरा वो एक, आप दोबारा सीख नहीं पाएंगे। आप दोबारा सीखने के लिए मन नहीं करेगा, yes, टाइम sir. नहीं निकलेगा। ओके, Yes, sir. Yes, तो sir. ये इसको कोशिश करिए। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म Yes, ई sir. टैब्स? Sir, actually, I'm not that much prepared right now. That's why. Uh, Okay, uh, why you want to learn about the structures? Sir, actually, there is a huge gap between my engineering and my job, as I am preparing for civil services. So, to cover that gap and enhance my knowledge, I choose this field. I am already working as a beam engineer structure with the Beam Engineers Gurgaon office. And to enhance my capability in structure, like basic things, uh, right now I am working as a modeler. So this course enhance my designing skills also, so that it also enhance my capability as well as my salary expectations.
That's why I choose a structure course. Okay. What's your current job responsibilities? Sir, right now I'm working as a beam engineer. Sir, my responsibilities is simple. Like currently, I am working in a Saudi Arabia project in which we model building 3D AutoCAD design using AutoCAD design and a PDF provided by the client. Okay, so this is your job responsibility, right? So Yes, sir. Yes, sir. from the PDF, you need to sketch on the AutoCAD. No, sir. We have both AutoCAD and PDF, and referring both, we design in Revit. Okay, okay, got you. I mean 3D modeling you're doing for the structures, right? Yes, sir. Right, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. like column, beam, and everything like. Yes, sir. Column beam, slab, flooring, staircase. Okay. What is anchor bar? Sir, anchor bar provided to it is provided to enhance the strength of the structure. Anchor bar, sir. Difference between ties and stirrups. Sir, stirrups is used in beam and ties is used in column. So they used to hold the horizontal and vertical bar respectively. Where we use lapping in beam. The lapping in beam when the length of the beam is like if we have bar of maximum length only 12 meters. So if we have a span more than that, then we have to lap. So where Okay, then we use lapping. ओके, थैंक यू सो मच दिव्यांशु। वैसे थोड़ी सी प्रिपरेशन की जरूरत है, आपको खुद दिख रहा होगा ना Yes, sir. कि प्रिपरेशन Yes, की sir. जरूरत है, तो उसको करिए। अभी आपका लाइन लेंथ पीछे सही था, अभी गड़बड़ हो Yes, रहा sir. है, राइट? तो अभी Yes, लाइन sir. लेंथ में आके वर्क करिए। ओके, Yes, ओके sir. जी, थैंक यू सो Thank मच you, sir. दिव्यांशु। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर विष्णु जी आ गए हैं, क्या बात है? मिस्टर विष्णु रेडी? हाँ रेडी सर। ओके, मैं विष्णु का हार्ड वर्क लाइक करता हूँ गाइस। ये इतना टफ जॉब के बाद भी लगभग कोशिश करते हैं कि मैं कितना कर लूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ही इज़ परफेक्ट, बिल्कुल नहीं, ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है? बट अगर हार्ड वर्क की बात हो तो मैं विष्णु को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करता हूँ विष्णु। ओह थैंक यू सर, ओके जी, थैंक्स फॉर दैट। ओके। नाउ मिस्टर विष्णु, आज छुट्टी थी कि ऑफिस था? ऑफिस से अभी आया सर, यस, जस्ट ठीक है। 2 मिनट हो गया। यस, देखो ऑफिस के साथ सीखना ना विष्णु, कोई भी चीज़ करना टफ होता है, बट जो करता है उसी का ये ग्रोथ ऐसे होता है, ठीक है? जो नहीं कर रहा है लेकिन उसका ऐसे होता है। मुझे पता है करने सिचुएशन सिचुएशन ऐसा मोल्ड किया सर। अच्छा है, ठीक है। अच्छा। सिचुएशन का ऐसा मोल्ड होना भी कभी कभी अच्छा होता है। मुझे कोई लड़का बोल रहा था कि सर मैं 6 साल से सीखना चाह रहा हूँ बीम को, बी आई को, 6 ईयर से, 6 और इयर्स। अभी तक मैं नहीं सीख पाया हूँ। तो मैंने बोला लगता है तुम्हारे घर में रोटियां पर्याप्त है। रोटियां पर्याप्त मतलब समझ गए? वी हैव टू फेस दैट थिंग सर। यस, ठीक है। अगर हमारे पास कोई चीज पर्याप्त है ना, तो हम उसके लिए ज्यादा स्ट्रगल नहीं करते हैं, है ना? हम मन से वो आना चाहते हैं तो सीखना चाहते हैं तो हाँ, ऐसे ही होता। ठीक। मैं पूरा मैनेज करके करके अभी आया। हाँ, सुबह में अगर तुम कभी वॉक करने निकलना तो देखोगे जितने लोग वॉक कर रहे हैं उसमें से 90% लोग वो होंगे जिनको बीपी या शुगर होगा। हाँ सही है, मतलब क्योंकि वो, दे आर इन लिविंग इन ए वेल ओनली, हम्म, दे ओनली डू सम सर्टेन यस, जॉब। वो मतलब उनसे जब नहीं, मतलब कैसे है, जब उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, उनको मतलब कि नहीं किसी को भी, ठीक है, तब हम ये काम करना स्टार्ट करते हैं। अगर यही वॉक करना, अगर यही एक्सरसाइज करना पहले, मैं खुद नहीं करता हूँ तो मैं भी राइट पर्सन नहीं हूँ, बट एक रियल जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ कि अगर हम लोग पहले से करते रहे तो ये आए ही ना। हाँ लेकिन हमारा होता ना सर नजीर, ऐसा करते हैं हाँ, लेकिन हम उससे चेंज होने तो थोड़ा कोशिश करना यस, पड़ेगा। प्रायोरिटी दे देंगे तो हो जाएगा, राइट। ठीक है? और आपने हाँ प्रायोरिटी दिया क्लास को, तभी आप क्लास में जल्दी जल्दी भाग के आए और ऑफिस से कि चलो भैया करना है ना, हाँ ठीक है? सर। ये बहुत अच्छी बात है। चलो, लेट्स Just स्टार्ट विद विष्णु। मिस्टर विष्णु, व्हाट इज द यूज ऑफ ई टैब सॉफ्टवेयर? ETAP software. ETAP software is mostly used for a G above G plus 8, which is a high-rise buildings and some
complicated structure. It will design as fast as possible compared to STAD Pro. Okay. STAD Pro, if we compare with the STAD Pro, it will take more time compared to an ETABS. Okay. Yes, And what is the use of shear wall? shear wall. Yeah. Uh, Shear wall is used basically used for a lift arrangement purpose. Why? Because means the damping forces and the damping reactions and masses mostly applied to the shear wall only. Why? Because the elevator and the elevator shall be moved up and down, sir. Some damping forces will applied on infill wall. It does not sustain that thing. So we applied a staggered bars along a vertical axis. We will make the shear wall. How much damping allow for RCC and steel members? Damping 0.5 percentage, sir. 0.5 for 0.5 0.05. Yeah, yeah. 0.05% Percentage damping ratio. 0.05 0.05 is In very STAD less. Pro, sir. In ETAPS 1.25, I think. Damping is not for ETFs or STAT, is for structure. Structure. कोई भी structure हो, like कोई भी software हो, both same. It is 5%. 5 percentage. That's why we write 0.05 means 5%. 5 percentage. Right? 0.05% मतलब बहुत कम हो गया ना, 1% का कितना छोटा सा भाग, right? And for steel structure, how much allow for damping? 1.15. 2%. 2%. Okay. And what is damping? Damping is a to and fro motion, just like a if a simple pendulum is there, there is a to and fro motion, but damping is a up, forward and bottom, downward. Okay. Just like. What is sagging and what is hogging? Sagging is a we will see when a beam A and B, when you apply load, it will deflect downwards, negative bending movement. It is a sagging. Hogging means it's a upward, positive bending movement. It is a hogging. Okay. Okay. What's the salary expression, Mr. Vishnu? As per industrial norms, as a fresher, I did not expecting this salary. Salary is not a mandatory for me. I want to enter in the structural engineering fields. ये आंसर आपके लिए सूट नहीं करता विष्णु, ठीक है, क्योंकि यू आर इन द ऑलरेडी जॉब, राइट, और इन अ सफिशिएंट पैकेज, ठीक है, तो ये फ्रेशर्स के लिए सही है, पवन के लिए आंसर सही है ना? तो कैसे है कि माय करंट सीटीसी इज दिस, ठीक है, बट सैलरी इज नॉट द प्रायोरिटी फॉर मी, आई एम फ्लेक्सिबल फॉर द सैलरी, आई जस्ट लाइक टू वर्क इन द स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग फील्ड. Earlier I did some projects on the structures. I feel very much passionate about myself in the structure engineering field. ठीक है, ठीक है, आप फ्रेशर्स तो बोल ही नहीं सकते हो, ठीक, बोल दिया तो नुकसान होगा आपका. ओके, ओके सर. ओके जी, थैंक यू सो मच विष्णु. विष्णु, कितना लेक्चर किया आपने ईटेप्स में? 27 कंप्लीट हो गया सर. ओके, और वो प्रोजेक्ट किया का ग्रिड वगैरह कुछ बनाया क्या उस प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट में ग्रिड बनाया, लेकिन थोड़ा मॉडलिंग में हियर एंड देयर हो गया, सो आई हैव टू बिगिन फ्रॉम फर्स्ट साइड. ओके, आज उसको क्या करना है, आज उसी प्रोजेक्ट को ना, उसी प्रोजेक्ट पर रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस करना है, और उसको करने के लिए आपको पहले लेक्चर वॉच करना है. कौन सा? लेक्चर 32, ठीक है, 32. ओके, ठीक है, डायरेक्ट करना है, ठीक है, बीच का छोड़ दीजिएगा. ओनली 32 सर. ओनली 32, ठीक है, क्योंकि उससे आपको रिस्पांस स्पेक्ट्रम समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद एनालिसिस कर लीजिएगा. सर, आई हैव मोर डाउट इन ए ड्राइंग शीट्स, लाइक ए वर्किंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग ड्राइंग एंड ऑन शॉप ड्राइंग समथिंग? हाँ, वर्किंग ड्राइंग होता है, सबमिशन ड्राइंग होगा, दो में से एक चीज, दो. ओके, एज पर साइट सर, आफ्टर साइट और बिफोर? आप थोड़ा सा और डेप्थ में समझो, बताओ कि आप क्या जानना चाह रहे हो, तो मैं बताता हूँ. Sir, I think working drawing is when a site is going on, the working drawing will be changes like that. Yes. But on-shop drawing is, I think, final drawing. If you directly go to the market, we will buy some quantity like that. Exactly, ठीक है.
आरसीसी की Yeah. बात करना चाह रहे हो या फिर स्टील में? पहले वो बताओ, फिर मैं और एक्सप्लेन करूँ। Um, क्योंकि और आरसीसी में जो होता है वो एक मास्टर ड्राइंग होता है, ठीक है, जिसके बिहार पर सारा वर्क आप कंप्लीट करते हो, ठीक है, मास्टर ड्राइंग। ओके, उसमें से आपकी एक वर्किंग ड्राइंग रहती है जो कि एग्जैक्टली ऑन साइड क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करना है, वो सब कुछ आपको वर्किंग ड्राइंग दिखाता है। ओके, स्टील की बात करोगे तो उसमें होता है शॉप ड्राइंग, ठीक है। Shop शॉप drawing. ड्राइंग मतलब होता है असेंबली, मतलब सेट ऑफ ऑल द ड्राइंग्स, सेट ऑफ So- सेट ऑफ ऑल द ड्राइंग्स, Okay. जिसमें I बोल। got one doubt, sir, about PPT. I completed my PPT in a mechanical foundation. Uh, there, I am studying when I am getting a doubt. When compared to the isolated footing and combined footing, pile footing, there is a common formula. But when we go to a mechanical foundation design, I observed earlier I did not see, but I just now I see. There is a oscillations, simply oscillations and frequency, damping ratio, पूरा लेके लेके into 5% of total weight of isolate that footing and total long load combinations score, load combinations and self weight of the footing into 5% means 500% strength देते हैं. In that there is any standard procedure, sir, when we go to the Indian standard or any foreign courts? नहीं, देखिए क्या कहते हैं, मशीन फाउंडेशन जहाँ तक आप डिजाइन कर रहे थे, मशीन फाउंडेशन ठीक है। के लिए सर. मशीन फाउंडेशन में अलग क्या हो जाता है ना कि मशीन फाउंडेशन में जो मशीनें होती है ना, उनका वाइब्रेशन आता रहता है। हाँ, मैं तोशिबा में देखा सर ऐसा. हाँ पूरा कॉपर वाइंडिंग मशीन है वो, हाँ पूरा लगभग 30 मीटर्स तक है, हाँ हाँ, और चल रहा है कंटिन्यू, कर 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 करके। कंटिन्यू ऐसा ऑसिलेट को होता है. हाँ और लाइक ए कैंटिंग मोशन एंड हाँ, और उसमें क्या डैम्पिंग. होता है, सामान जो है इधर से उधर ट्रांसफर होता भी रहता है, तो उसमें मूविंग भी लग जाता है, एक्सेलरेशन भी आ जाता है, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी तो रहता ही है कंटिन्यू, ठीक है। इसके कंटिन्यू लोड आता है. यस, तो इसके वजह से उनका स्ट्रक्चर को होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है एज कम्पेयर टू बिल्डिंग के जो आइसोलेटेड फुटिंग है आपकी, ठीक है। या तो उसके लिए एक कोड है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 29 समथिंग करके है, रिसेंट में मैं उसको पढ़ा था। 296. हाँ, ऐसे कुछ है कोड, तो कोड के थ्रू आप डिजाइन करेंगे, उस कोड में पूरा प्रोसीजर दिया हुआ, मेरे पास कोड था। अ, ठीक है, मैं आपको, सर. ठीक है, कोड है मेरे पास, उस कोड में पूरा इसका डिजाइन दिया हुआ, एक दिन मैं भी पढ़ रहा था, इतने ज्यादा उसके अंदर है कि 11 फैक्टर्स हैं उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर जाएंगे तो बड़ा अच्छा है। और मैं तो पूरा पढ़ा उसको, बट कैसा होता है, इस कोड तो याद नहीं होता ना, तो याद नहीं होता ज्यादा। हाँ जी बोलिए। With your consent, I will share some petrochemical drawings, sir. यस यस, इफ यू आर रेडी यू कैन प्रेजेंट टुडे ऑल्सो, ठीक है, आई एम हैप्पी टू सी, इवन इफ यू वांट यू कैन प्रेजेंट फॉर एवरीवन ऑल्सो। Give me a 10 minutes, sir. I will show that shell drawings, shell देन company का petrochemical ओके, drawings. तो 10 मिनट फॉर दैट इट्स बेटर, यू कैन जस्ट डू टुमारो, आप प्रिपेयर करके रखना, ठीक है। हाँ क्योंकि मॉक हो चुका है ना, अभी हम टॉपिक लेंगे तो लंबा जाएगा, है ना। तो अगर हाँ, आप, ठीक है, क्योंकि अगर आपने शायद सेट नहीं किया होगा ना कि कहाँ पर दिखाना कॉस्ट, राइट, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हो कि आप रेडी करके रखो, कल दिखा दो, अगर अभी तुरंत दिखा सकते हो तो अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। give me some time, sir. After all mock, I will present. मॉक इज फिनिश नाउ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। Oh, total finish, yeah. ओनली 3 मेंबर्स आर देयर, Oh, ठीक है, तो इसीलिए बोला कल दिखा देना मुझे, ठीक है, कल दिखा okay, sir. देना, ठीक है, नो इशू, हाँ, चलेगा, ओके, ठीक है जी। चलो तो गाइस, अभी हम लोग को क्या करना है, बस एक लेक्चर 32 को वॉच करके रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस को हम लोग को करना है। और प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे पवन से, प्रशांत से, चल विष्णु का इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी एक अजी जॉब में जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू अप्लाई करिए प्लीज़। और मेरे अकॉर्डिंग आप तीनों ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इसमें पवन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्लियरली बताना चाहिए। एंड प्रशांत भी अच्छा कर रहे हैं, प्रशांत इवन सेकंड नंबर पर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। विष्णु जॉब के साथ जितना हो सकता है उसमें तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, आई एम नॉट टेलिंग कि इज परफेक्ट, बट जॉब के साथ करना इतना ही अपने आप में ठीक ठाक होता है, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो बिल्कुल आप पूछिए, और नहीं है तो लेक्चर 32 को वॉच करके रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम करिए और एनालिसिस, और फिर